Hello students and welcome to the Virtual Learning Network. This is session 10 for Modern India 1857 to 1964 and here we will discuss Indian National Congress, the moderates and extremists. The topics to be covered are Introduction, Composition of the Congress, the moderates, the extremists and moderates and extremists and analysis. Now first is introduction. The declared aims of the Congress were the promotion of friendly relation among political workers hailing from different parts of the country, development and consolidation of the feeling of national unity irrespective of caste, creed or religion, and the education and organization of public opinion for the welfare of the country. So, जब कांग्रेस स्टैब्लिश हुई थी तो उनके मेन एम्स थे पहला कि उन्हें पॉलिटिकल वर्कर्स के बीच में फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश करनी है और प्रमोट करनी है. देन सबके बीच में एक नेशनल यूनिटी की फीलिंग होनी चाहिए और इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कौन सी कास्ट के हैं, कौन सी रीजन के हैं. उसके बाद एक एजुकेशन और ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए पब्लिक ओपिनियन में ताकि कंट्री का भला हो सके. द अर्ली ईयर्स दैट इज 1885 to 1905 saw the evaluation of Indian National Congress. So जो अर्ली ईयर्स थे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की इवोल्यूशन हुई थी या वो फॉर्म हुई थी वो थे 1885 से 1905 एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड द कांग्रेस वाज डोमिनेटेड बाय मॉडरेट लीडर्स. और शुरू में जो लीडर्स थे वो मॉडरेट लीडर्स थे. Gradually a section emerged which did not agree with the moderate policies and believed in aggressive action. और धीरे धीरे उसके बाद एक सेक्शन आया ऐसे लीडर्स का जो मॉडरेट पॉलिसीज में बिलीव नहीं करते थे और थोड़े एग्रेसिव थे. एंड ड्यू टू देयर एग्रेसिव पोस्चर दिस ग्रुप वाज कॉल्ड द एक्सट्रीमिस्ट. Next is the composition of the Congress. Beginning with its first session at Bombay in 1885, the Congress became, by 1886, second session of Calcutta, the whole country's Congress. So, जब कांग्रेस का पहला सेशन था बॉम्बे में, उससे लेके जब कैलकाटा में सेकेंड सेशन हुआ तब तक कांग्रेस एक पूरी कंट्री के लिए एक मेन ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी. In 1885, only 72 delegates had attended the Congress session, whereas Calcutta session had 434 delegates elected by different local organizations and bodies. And here it was decided that the Congress would meet henceforth annually in different parts of the country. So, 1885 में कांग्रेस का जब पहला सेशन था उसमें 72 डेलीगेट्स थे लेकिन कैलकाटा सेशन में 434 डेलीगेट्स थे और इसके बाद डिसाइड हुआ कि कांग्रेस अब एनुअली मीटिंग कंडक्ट करेगी अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में. देन among the classes the educated middle class had the largest share. जो educated middle class थी उसमें सबसे ज्यादा शेयर था कांग्रेस में. Then the legal profession was mostly heavily represented by the professions. The Brahmins among the caste were comparatively larger in number. Now the moderates. The Congress program during the first phase, that is 1885 to 1905, were very modest. It demanded moderate constitutional reforms, economic relief, administrative reorganization, and defense of civil rights. The major demands of the Congress were the organization of the provincial councils, simultaneous examination for the ICS in India and England, abolition or reconstitution of the Indian Council, separation of the judiciary from the executive, the repeal of the Arms Act, appointment of Indians to the commissioned ranks in the army, the reduction of military expenditure and the introduction of permanent settlement to other parts of India. So जो कांग्रेस की डिमांड शुरू में थी वो काफ़ी मॉडेस्ट थी. Congress expressed opinion on all important measures of the government and protested against the unpopular ones.
These demands were repeated year after year, although there was hardly any response from the government. And during the first 20 years, there was practically no change in the Congress program. The major demands were practically the same as those formulated at the first 3 or 4 sessions. So कांग्रेस ने शुरू में काफ़ी सारी डिमांड्स एक्सप्रेस की थी गवर्नमेंट के सामने, लेकिन ये डिमांड्स सेम तरीके से रिपीट की गई हर सेशन में, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ. गवर्नमेंट ने उनकी एक भी नहीं सुनी और पहले 20 सालों में कोई भी चेंज नहीं आया कांग्रेस के प्रोग्राम्स में और मेजर डिमांड्स जो थी वो भी प्रैक्टिकली सेम ही थी शुरू के 3-4 सेशंस में. दिस फेज ऑफ द कांग्रेस इज नोन एज मॉडरेट फेज. ड्यूरिंग दिस पीरियड द लीडर्स वर कॉशियस इन देयर डिमांड्स. इस पीरियड में जो लीडर्स थे वो बहुत कॉशियस थे अपनी डिमांड्स को लेके. They did not want to annoy the government and incur the risk of suppression for their activities. वो गवर्नमेंट को गुस्सा दिलाना नहीं चाहते थे और ना ही सप्रेशन इनकर करना चाहते थे और इसीलिए काफी मॉडरेट फेज था वो. From 1885 to 1892, their main demand continued to be expansion and reform of the legislative councils, the member of the councils for elected representatives of the people, and also an increase in the power of these councils. Then next are the extremists. Extremism in the Indian national scene did not spring up all of a sudden in the first decade of the 20th century. In fact, it had been growing slowly but invisibly since the revolt of 1857 itself. So ये जो एक्सट्रीमिज्म था इंडियन नेशनल में, ये एकदम से नहीं आया था, धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा था 1857 के बाद से ही, लेकिन दिखाई देना शुरू हुआ 19th सेंचुरी के शुरुआत में. नाउ आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एक्सट्रीमिज्म. The nationalist ideas behind the revolt of 1857 according to the extremists were स्वधर्म एंड स्वराज. जो नेशनलिस्ट आइडिया था रिवोल्ट के पीछे अगर हम देखें तो एक्सट्रीमिस्ट के हिसाब से था स्वधर्म और स्वराज. अटैचमेंट ऑफ रैशनलिज्म एंड वेस्टर्न आइडियल्स हैड ऑलमोस्ट एलिनेटेड द लिबरल दैट इज मॉडरेट स्कूल फ्रॉम द मासेस इन इंडियन. दैट इज व्हाई डिस्पाइट देयर हाई idealism they failed to make any effective impact on the people. In due course, a section was bound to come to fill this gap. In the place of adoration and imitation of all things Western, there was a movement by the 80s of the 19th century urging people to look to their ancient civilization. An undercurrent of this type had existed earlier, but during the revolt of 1857, it had suddenly burst into open. However, the English educated community by and large had kept itself aloof from the main current of Indian life and remained untouched by this trend. Then, the historic task of bridging the gulf between the educated few and the general people was accomplished by Paramhans Ramakrishna and his English educated disciple Swami Vivekanand. Swami Dayanand, who was well versed in Vedic literature and the Arya Samaj founded by him, also played a vital role in this direction. Then, the extremist in action. Tilak resented any interference by the alien government into the domestic and private life of the people. गंगाधर तिलक को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि एलियन गवर्नमेंट दैट इज ब्रिटिशर्स इंडियन पीपल की लाइफ में इंटरफेयर करें, और इसके लिए उन्होंने उनके अगेंस्ट भी खड़े हुए थे. He quarreled with the reformers of the Age of Consent Bill in 1891. He introduced the Ganpati festival in 1893. Aurobindo published New Lamps for Old in the Indu Prakash between 1893 and 1894. Tilak threw a challenge to the National Social Conference in 1895 by not allowing it to hold its session in the Congress Pavilion in Pune. The National Social Conference was under the influence of moderate wing. In the same year, the Pune Sarvajanik Sabha was captured by the extremists from the moderates. The Shivaji festival was first held on 15 April 1896 with the foundation of the Deccan Sabha on November 4, 1896.
the division between the extremists and the moderates in Maharashtra was complete, but it was not so all over India. So because of the soft and vacillating policy it pursued, Lajpat Rai was not interested in Congress program, and between 1893 and 1900 he did not attend any meeting of the Congress. So जो extremists थे वो moderates के बिल्कुल खिलाफ थे, और जो moderates की शुरू में डिमांड्स थी वो बिल्कुल उन्हें अच्छी नहीं लगी, इसीलिए लाजपत राय ने भी 1893 से लेके 1900 के बीच में जितनी भी मीटिंग्स हुई कांग्रेस की वो अटेंड नहीं करी. Then the moderates and extremists and an analysis. The moderates had faith in gradual reforms, whereas the nationalists believed the Swaraj is their birthright. जो मॉडरेट्स थे उनके ग्रेजुअल रिफॉर्म्स में फेथ थे कि धीरे धीरे करके उनकी डिमांड्स मीट की जाएंगी, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्हें लगता था कि स्वराज उनका जन्म सिद्ध अधिकार है. द मॉडरेट्स बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ mendicancy, but the extremists were against it. Moderates were against an all-out struggle against the British, but the nationalists wanted to mobilize the whole country against the British rule. So moderates जो थे वो अहिंसा को मानते थे, उन्हें लगता था कि ब्रिटिश के अगेंस्ट जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्हें लगता था कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट कंट्री जब तक नहीं खड़ी होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता. The moderates believed that the British could be persuaded to see the justness of their demand, but on the other hand, the nationalists were of the view that the demands could be realized only by putting pressure on the British government. मॉडरेट्स को लगता था कि ब्रिटिश को ये समझाया जा सकता है कि जो उनके डिमांड्स हैं वो जस्ट हैं, वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन नेशनलिस्ट को ये लगता था कि उनके डिमांड्स को तभी पूरा किया जा सकता है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कुछ प्रेशर डाला जाएगा. Then the moderate leaders were sent to jails, but the nationalists were beaten, handcuffed and sent to jail several times. Moderate leaders को सिर्फ जेल में डाला जाता था, लेकिन जो नेशनलिस्ट थे या एक्सट्रीमिस्ट थे उनको मारा जाता था, हैंडकफ किया जाता था और उसके बाद जेल जाते थे वो काफी बार. इसलिए जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनके ऊपर ज्यादा अत्याचार होते थे क्योंकि वो ज्यादा बोलते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ. Now here are some questions for you. What are the critique of economic policies of the Raj put forward by early nationalists? And second is, how did Surat split hamper the growth of national movement? That's all for this session. Thank you and have a nice day.